Chapter 19. Emma and Harriet had been walking together one morning, and, in Emma's opinion, had been talking enough of Mr. Elton for that day. She could not think that Harriet's solace or her own sins required more. And she was therefore industriously getting rid of the subject as they returned. But it burst out again when she thought she had succeeded. And after speaking some time of what the poor must suffer in winter, and receiving no other answer than a very plaintive, "Mr. Elton is so good to the poor," she found something else must be done. They were just approaching the house where lived Mrs. and Miss Bates. She determined to call upon them and seek safety in numbers. There was always sufficient reason for such an attention. Mrs. and Miss Bates loved to be called on, and she knew she was considered by the very few who presumed ever to see imperfection in her, as rather negligent in that respect, and as not contributing what she ought to the stock of their scanty comforts. She had had many a hint from Mr. Knightley and some from her own heart as to her deficiency, but none were equal to counteract the persuasion of its being very disagreeable, a waste of time, tiresome women, and all the horror of being in danger of falling in with the second-rate and third-rate of Highbury, who were calling on him forever, and therefore she seldom went near them. But now she made the sudden resolution of not passing the door without going in, observing, as she proposed it to Harriet, that, as well as she could calculate, they were just now quite safe from any letter from Jane Fairfax. The house belonged to people in business. Mrs. and Miss Bates occupied the drawing-room floor. And there, in the very moderate-sized apartment, which was everything to them, the visitors were most cordially and even gratefully welcomed. The quiet, neat old lady, who with her knitting was seated in the warmest corner, wanting even to give up her place to Miss Woodhouse, and her more active, talking daughter, almost ready to overpower them with care and kindness, thanks for their visit, solicitude for their shoes, anxious inquiries after Mr. Woodhouse's health, cheerful communications about her mother's, and sweet cake from the buffet. Mrs. Cole had just been there, just called in for 10 minutes, and had been so good as to sit an hour with them. And she had taken a piece of cake and been so kind as to say she liked it very much, and, therefore, she hoped Miss Woodhouse and Miss Smith would do them the favor to eat a piece too. The mention of the Coles was sure to be followed by that of Mr. Elton. There was intimacy between them, and Mr. Cole had heard from Mr. Elton since his going away. Emma knew what was coming. They must have the letter over again, and settle how long he had been gone, and how much he was engaged in company, and what a favorite he was wherever he went, and how full the master of the ceremonies ball had been. And she went through it very well, with all the interest and all the commendation that could be requisite, and always putting forward to prevent Harriet's being obliged to say a word. This she had been prepared for when she entered the house, but meant, having once talked him handsomely over, to be no farther incommoded by any troublesome topic, and to wander at large amongst all the mistresses and misses of Highbury, and their card parties. She had not been prepared to have Jane Fairfax succeed Mr. Elton. But he was actually hurried off by Miss Bates. She jumped away from him at last abruptly to the Coles, to usher in a letter from her niece. "Oh, yes, Mr. Elton. I understand. Certainly as to dancing, Mrs. Cole was telling me that dancing at the rooms at Bath was. Mrs. Cole was so kind as to sit some time with us, talking of Jane, for as soon as she came in, she began inquiring after her. Jane is so very great a favorite there. Whenever she is with us, Mrs. Cole does not know how to show her kindness enough. And I must say that Jane deserves it as much as anybody can.
And so she began inquiring after her directly, saying, "I know you cannot have heard from Jane lately, because it is not her time for writing." And when I immediately said, "But indeed we have. We had a letter this very morning," I do not know that I ever saw anybody more surprised. "Have you? Upon your honor?" said she. "Well, that is quite unexpected. Do let me hear what she says." Emma's politeness was at hand directly, to say, with smiling interest, "Have you heard from Miss Fairfax so lately? I am extremely happy. I hope she is well." "Thank you. You are so kind," replied the happily deceived aunt, while eagerly hunting for the letter. "Oh, here it is. I was sure it could not be far off. But I had put my housewife upon it, you see, without being aware, and so it was quite hid, but I had it in my hand so very lately that I was almost sure it must be on the table. I was reading it to Mrs. Cole, and since she went away, I was reading it again to my mother, for it is such a pleasure to her, a letter from Jane, that she can never hear it often enough. So I knew it could not be far off, and here it is, only just under my housewife. And since you are so kind as to wish to hear what she says, but, first of all, I really must, in justice to Jane, apologize for her writing so short a letter. Only 2 pages, you see, hardly 2, and in general she fills the whole paper and crosses half. My mother often wonders that I can make it out so well. She often says, when the letter is first opened, 'Well, Hetty, now I think you will be put to it to make out all that checker work, don't you, Ma'am?' And then I tell her I am sure she would contrive to make it out herself, if she had nobody to do it for her. Every word of it. I am sure she would pore over it till she had made out every word. And, indeed, though my mother's eyes are not so good as they were, she can see amazingly well still, thank God. With the help of spectacles. It is such a blessing. My mothers are really very good indeed. Jane often says, when she is here, I am sure, Grandmama, you must have had very strong eyes to see as you do, and so much fine work as you have done too. I only wish my eyes may last me as well." All this spoken extremely fast obliged Miss Bates to stop for breath, and Emma said something very civil about the excellence of Miss Fairfax's handwriting. "You are extremely kind," replied Miss Bates, highly gratified. "You who are such a judge, and write so beautifully yourself. I am sure there is nobody's praise that could give us so much pleasure as Miss Woodhouse's. My mother does not hear. She is a little deaf, you know. Ma'am," addressing her, "do you hear what Miss Woodhouse is so obliging to say about Jane's handwriting?" And Emma had the advantage of hearing her own silly compliment repeated twice over before the good old lady could comprehend it. She was pondering, in the meanwhile, upon the possibility, without seeming very rude, of making her escape from Jane Fairfax's letter, and had almost resolved on hurrying away directly under some slight excuse, when Miss Bates turned to her again and seized her attention. "My mother's deafness is very trifling, you see, just nothing at all. By only raising my voice, and saying anything 2 or 3 times over, she is sure to hear. But then she is used to my voice. But it is very remarkable that she should always hear Jane better than she does me. Jane speaks so distinct. However, she will not find her grandmamma at all deafer than she was 2 years ago. Which is saying a great deal at my mother's time of life. And it really is full 2 years, you know, since she was here. We never were so long without seeing her before, and as I was telling Mrs. Cole, we shall hardly know how to make enough of her now. Are you expecting Miss Fairfax here soon?"
Oh yes, next week. Indeed. That must be a very great pleasure. Thank you. You are very kind. Yes. Next week. Everybody is so surprised. And everybody says the same obliging things. I am sure she will be as happy to see her friends at Highbury as they can be to see her. Yes, Friday or Saturday. She cannot say which, because Colonel Campbell will be wanting the carriage himself one of those days. So very good of them to send her the whole way. But they always do, you know. Oh yes. Friday or Saturday next. That is what she writes about. That is the reason of her writing out of rule, as we call it. For, in the common course, we should not have heard from her before next Tuesday or Wednesday. Yes, sir, I imagined. I was afraid there could be little chance of my hearing anything of Miss Fairfax today. So obliging of you. No, we should not have heard, if it had not been for this particular circumstance, of her being to come here so soon. My mother is so delighted. For she is to be 3 months with us at least. 3 months, she says so, positively, as I am going to have the pleasure of reading to you. The case is, you see, that the Campbells are going to Ireland. Mrs. Dixon has persuaded her father and mother to come over and see her directly. They had not intended to go over till the summer, but she is so impatient to see them again, for till she married last October, she was never away from them so much as a week, which must make it very strange to be in different kingdoms, I was going to say, but however different countries. And so she wrote a very urgent letter to her mother, or her father, I declare I do not know which it was. But we shall see presently in Jane's letter, wrote in Mr. Dixon's name as well as her own, to press their coming over directly, and they would give them the meeting in Dublin, and take them back to their country seat, Barley Craig, a beautiful place, I fancy. Jane has heard a great deal of its beauty. From Mr. Dixon, I mean. I do not know that she ever heard about it from anybody else, but it was very natural, you know, that he should like to speak of his own place while he was paying his addresses, and as Jane used to be very often walking out with him, for Colonel and Mrs. Campbell were very particular about their daughters not walking out often with only Mr. Dixon, for which I do not at all blame them. Of course she heard everything he might be telling Miss Campbell about his own home in Ireland, and I think she wrote us word that he had shown him some drawings of the place. Views that he had taken himself. He is a most amiable, charming young man, I believe. Jane was quite longing to go to Ireland, from his account of things. At this moment, an ingenious and animating suspicion entering Emma's brain with regard to Jane Fairfax, this charming Mr. Dixon, and the not going to Ireland, she said, with the insidious design of farther discovery. You must feel it very fortunate that Miss Fairfax should be allowed to come to you at such a time, considering the very particular friendship between her and Mrs. Dixon. You could hardly have expected her to be excused from accompanying Colonel and Mrs. Campbell. Very true, indeed. The very thing that we have always been rather afraid of. For we should not have liked to have her at such a distance from us, for months together, not able to come if anything was to happen. But you see, everything turns out for the best. They want her, Mr. and Mrs. Dixon, excessively to come over with Colonel and Mrs. Campbell. Quite depend upon it, nothing can be more kind or pressing than the joint invitation, Jane says, as you will hear presently. Mr. Dixon does not seem in the least backward in any attention. He is a most charming young man. Ever since the service he rendered Jane at Weymouth, when they were out in that party on the water, and she,
by the sudden whirling round of something or other among the sails, would have been dashed into the sea at once, and actually was all but gone, if he had not, with the greatest presence of mind, caught hold of her habit. I can never think of it without trembling. But ever since we had the history of that day, I have been so fond of Mr. Dixon. But, in spite of all her friend's urgency, and her own wish of seeing Ireland, Miss Fairfax prefers devoting the time to you and Mrs. Bates. Yes, entirely her own doing, entirely her own choice. And Colonel and Mrs. Campbell think she does quite right, just what they should recommend, and indeed they particularly wish her to try her native air, as she has not been quite so well as usual lately. I am concerned to hear of it. I think they judge wisely. But Mrs. Dixon must be very much disappointed. Mrs. Dixon, I understand, has no remarkable degree of personal beauty, is not, by any means, to be compared with Miss Fairfax. Oh, no, you are very obliging to say such things, but certainly not. There is no comparison between them. Miss Campbell always was absolutely plain, but extremely elegant and amiable. Yes, that of course. Jane caught a bad cold, poor thing, so long ago as the 7th of November, as I am going to read to you, and has never been well since. A long time, is not it, for a cold to hang upon her? She never mentioned it before, because she would not alarm us. Just like her, so considerate. But however, she is so far from well, that her kind friends the Campbells think she had better come home, and try an air that always agrees with her. And they have no doubt that 3 or 4 months at Highbury will entirely cure her, and it is certainly a great deal better that she should come here, than go to Ireland, if she is unwell. Nobody could nurse her, as we should do. It appears to me the most desirable arrangement in the world. And so she is to come to us next Friday or Saturday. And the Campbells leave town in their way to Holyhead the Monday following, as you will find from Jane's letter. So sudden. You may guess, dear Miss Woodhouse, what a flurry it has thrown me in. If it was not for the drawback of her illness, but I am afraid we must expect to see her grown thin, and looking very poorly. I must tell you what an unlucky thing happened to me, as to that. I always make a point of reading Jane's letters through to myself first, before I read 'em aloud to my mother, you know, for fear of there being anything in 'em to distress her. Jane desired me to do it, so I always do. And so I began today with my usual caution, but no sooner did I come to the mention of her being unwell, than I burst out, quite frightened, with, "Bless me! Poor Jane is ill," which my mother, being on the watch, heard distinctly, and was sadly alarmed at. However, when I read on, I found it was not near so bad as I had fancied at first. And I make so light of it now to her, that she does not think much about it. But I cannot imagine how I could be so off my guard. If Jane does not get well soon, we will call in Mr. Perry. The expense shall not be thought of. And though he is so liberal, and so fond of Jane that I dare say he would not mean to charge anything for attendance, we could not suffer it to be so, you know. He has a wife and family to maintain, and is not to be giving away his time. Well, now I have just given you a hint of what Jane writes about, we will turn to her letter. And I am sure she tells her own story a great deal better than I can tell it for her. I am afraid we must be running away, said Emma, glancing at Harriet, and beginning to rise. My father will be expecting us. I had no intention, I thought I had no power of staying more than 5 minutes, when I first entered the house. I merely called.
because I would not pass the door without inquiring after Mrs. Bates. But I have been so pleasantly detained. Now, however, we must wish you and Mrs. Bates good morning." And not all that could be urged to detain her succeeded. She regained the street, happy in this, that though much had been forced on her against her will, though she had in fact heard the whole substance of Jane Fairfax's letter, she had been able to escape the letter itself. आप 19 एमा और हैरियट एक सुबह एक साथ चहलकदमी कर रहे थे, और एमा की राय में इस दिन तक मिस्टर एल्टन के बारे में काफी बातें कर रहे थे। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि हैरियट की तस्कीन या उसके अपने गुनाहों की मजीद जरूरत है, और इसलिए वो मेहनत से इस मौजू से छुटकारा हासिल कर रही थी जैसे ही वो वापस आए। लेकिन ये फिर फट पड़ा जब उसने सोचा कि वो कामयाब हो गई है, और उसके बारे में कुछ देर बोलने के बाद कि गरीबों को सर्दियों में क्या तकलीफ उठानी पड़ती है, और उसे एक इंतहाई मुद्दे के सिवा कोई जवाब नहीं मिला। मिस्टर एल्टन गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। इसे मालूम हुआ कि कुछ और करना चाहिए। वो अभी इस घर के करीब पहुंच रहे थे जहां मिसेज और मास बेटिस रहती थी। उसने उनको फोन करने और तादाद में हिफाजत तलाश करने का अज़्म किया। इस तरह की तवज्जो के लिए हमेशा काफी वजह थी। मिसेज और मास बेटिस को बुलाया जाना पसंद था, और वो जानती थी कि वो बहुत कम लोगों की तरफ से समझा जाता है जिन्होंने कभी भी इसमें खामी को देखा। इस लिहाज से वो गाफिल है, और उसमें वो हिस्सा नहीं डाल रहे हैं जो उसे करना चाहिए था। उनकी कम सहूलतों का जखीरा। इसे मिस्टर नाइटली से बहुत से इशारे मिले थे और कुछ अपने दिल से इसकी कमी के बारे में, लेकिन कोई भी इस के इंतहाई नागवार होने के कायल का मुकाबला करने के बराबर नहीं था। वक्त का जिया, थका देने वाली खवातीन, और तमाम वशत हाई बेरी के दूसरे और तीसरे दर्जे के साथ गिरने का खतरा था जो इन्हें हमेशा के लिए पुकार रहे थे, और इसलिए वो शाज़ व नादिर ही उनके करीब जाती थी। लेकिन अब उसने अचानक फैसला किया कि अंदर जाने के बगैर उनके दरवाजे से नहीं गुजरेंगे, मुशाहिदा करते हुए, जैसा कि इसने हैरियट को तजवीज़ किया कि वो हिसाब कर सकती थी। अब वो जीन फेयरफिक्स के किसी भी खत से बिल्कुल महफूज थे। घर कारोबारी लोगों का था। मिसेज और मास बेटिस ने ड्राइंग रूम के फर्श पर कब्जा कर लिया था, और वहाँ बहुत ही एतदाल पसंद अपार्टमेंट में, जो उनके लिए सब कुछ था, मेहमानों का इंतहाई खुश उसलूबी से और यहाँ तक कि शक्करगुजार इस्तकबाल किया गया। खामोश साफ सुथरी बूढ़ी खातून जो अपनी बनाई के साथ गर्म तरीन कोने में बैठी थी, यहाँ तक कि अपनी जगह मास वुड हाउस को देना चाहती थी, और उसकी ज्यादा फाल बात करने वाली बेटी जो उनके आने का शुक्रिया, उनके जूतों के लिए तन्हाई, मिस्टर वुड हाउस की सेहत के बारे में फिक्रमंदाना पूछगछ, उनकी वालिदा के बारे में खुशगवार मुवासलत, और बॉफे से मीठा केक। मिसेज कोल अभी वहाँ आया था, सिर्फ 10 मिनट के लिए फोन किया, और उनके साथ 1 घंटा बैठना इतना अच्छा था, और उसने केक का एक टुकड़ा लिया और इतनी मेहरबान थी कि इसे बहुत पसंद आया, और इसलिए वो मास उम्मीद थी वुड हाउस और मास असमित उन पर भी एक टुकड़ा खाने का एहसान करेंगे। कूलस का जिक्र यकीनी तौर पर मिस्टर एल्टन के बाद होगा। इनके दरमियान कुर्बत थी, और मिस्टर कोल ने मिस्टर एल्टन के जाने के बाद से उनकी बात सुनी थी। एमा जानती थी कि क्या हो रहा है। उनके पास ये खत दोबारा होना चाहिए और तय करना चाहिए कि वो कितने अरसे से चला गया था, और वो कितना सुहबत में था, और जहाँ भी गया था वो कितना पसंदीदा था, और मास्टर ऑफ दी सेरेमनीज की गेंद कितनी भरी हुई थी। और उसने पूरी दिलचस्पी और तमाम तारीफों के साथ बहुत अच्छी तरह से गुजरा, और हमेशा हैरियट को एक लफ्ज कहने पर मजबूर होने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसके लिए वो तैयार थी।
लेकिन इसका मतलब ये था कि एक बार इसके साथ खूबसूरती से बात करने के बाद किसी भी परेशान किन मौजू से ज्यादा परेशान न हूँ। और तमाम मालिकन और मिसेज ऑफ हाईबेरी और उनकी कार्ड पार्टियों के दरमियान बड़े पैमाने पर घूमना। वो जीन फेयरफिकस मिस्टर एल्टन की जगह लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हकीकत में उसे मास बेटस ने जल्दी से उतारा था। वो अपनी भांजी की तरफ से एक खत लिखने के लिए आखिरकार अचानक इससे कूद गई। हाँ मिस्टर एल्टन, मैं समझता हूँ, यकीनन नाचने के बारे में। मिसेस कोल मुझे बता रही थी कि बात के कमरों में डांस करना था। मिसेस कोल इतनी मेहरबान थी कि हमारे साथ कुछ देर बैठे, जीन के बारे में बात करें, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आई उसने इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। जीन वहाँ बहुत पसंदीदा है। जब भी वो हमारे साथ होती हैं, मिसेस कोल नहीं जानती कि अपनी मेहरबानी का मुजाहिरा कैसे करें। और मुझे ये कहना जरूरी है कि जीन मुस्तहिक है, जितना कोई कर सकता है। और इस तरह वो इससे बराह रास्त पूछने लगी, मैं जानती हूँ कि आपने हाल ही में जीन से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये इसके लिखने का वक्त नहीं है। और जब मैंने फौरन कहा, लेकिन वाकई हमारे पास एक खत था। सुबह, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी किसी को इससे ज्यादा हैरान देखा है। क्या आपकी इज्जत पर है? उसने कहा, ठीक है, ये काफी गैर मुतवक्के है। मुझे सुनने दो कि वो क्या कहती है। एमा की शाइस्तगी बराह रास्त हाथ में थी, मुस्कुराते हुए दिलचस्पी के साथ कहने के लिए, क्या आपने मास फेयरफिकस से हाल ही में सुना है? मैं बेहद खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक है। शुक्रिया, तुम बहुत मेहरबान हो। खाला ने खुशी से धोखा खा कर खत का बेताबी से शिकार करते हुए जवाब दिया, हाँ, ये रहा। मुझे यकीन था कि ये दूर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपनी घरेलू खातून को इस पर डाल दिया था। आपने देखा, बगैर किसी खबर के, और इस तरह ये काफी छुपा हुआ था, लेकिन मेरे हाथ में ये बहुत ही हाल में था कि मुझे तकरीबा यकीन था कि ये मेज पर ही होगा। मैं इसे मिसेस कोल को पढ़ रहा था, और जब से वो चली गई थी, मैं उसे दोबारा अपनी माँ को पढ़ रहा था, क्योंकि ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। जीन का एक खत के वो इसे अक्सर सुन नहीं सकती, लिहाजा मैं जानता था कि ये ज्यादा दूर नहीं हो सकता है, और ये सिर्फ मेरी घरेलू खातून के तहत है। और चूंकि आप इस कदर मेहरबान हैं कि वो सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहती है, लेकिन सब से पहले मुझे वाकई इंसाफ में जीन, इसके इतने मुख्तसर खत के लिए माजरत ख्वाह है। सिर्फ 2 सफ़े जो आपको नजर आते हैं, बमुश्किल 2, और आम तौर पर वो पूरा कागज भरती है और आधा पार करती है। मेरी वालिदा अक्सर सोचती है कि मैं उसे इतनी अच्छी तरह से बना सकता हूँ। वो अक्सर कहती है, जब खत पहली बार खोला जाता है, अच्छा हेटी, अब मुझे लगता है कि आपको इस सारे काम को पूरा करने के लिए लगा दिया जाएगा, क्या आप नहीं, मैडम? और फिर मैंने उससे कहा, मुझे यकीन है कि अगर वो उसे खुद ही अंजाम देने की कोशिश करेगी, उसके पास उसके लिए ऐसा करने के लिए कोई नहीं था। इसका हर लफ्ज, मुझे यकीन है कि वो उस वक्त तक इस पर छेड़छाड़ करेगी जब तक कि वो हर एक लफ्ज को बयान न कर ले। और वाकई, अगरचे मेरी माँ की आंखें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी वो थी, लेकिन वो अब भी हैरत अंगेज तौर पर अच्छी तरह देख सकती हैं। खुदा का शुक्र है, ऐनक की मदद से ये एक ऐसी नेमत है। मेरी माँ वाकई बहुत अच्छी हैं। जीन अक्सर कहती है, जब वो यहाँ होती है, मैं मुझे यकीन है, दादी, आपकी नजरें बहुत मजबूत होंगी कि आप जैसा करते हैं, और इतना ही उम्दा काम आपने भी किया है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें भी मेरे साथ रहीं। ये सब कुछ इंतहाई तेजी से बोला गया, जिसने मास बेटिस को सांस लेने के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। और एमा ने मास फेयरफिकस की हैंड राइटिंग की फजीलत के बारे में बहुत सूल बात कही। आप बहुत मेहरबान हैं, मास बेटिस ने इंतहाई खुश होते हुए जवाब दिया। तुम जो ऐसे जज हो, और खुद भी इतना खूबसूरत लिखते हो।
मुझे यकीन है कि कोई भी ऐसी तारीफ नहीं कर सकता जो हमें मास वुड हाउस की तरह इतनी खुशी दे सके। मेरी माँ नहीं सुनती, वो थोड़ी बहरी है, तुम जानते हो। मैडम, इससे मुखातब होकर, क्या आप सुनते हैं कि मास वुड हाउस क्या कहने पर मजबूर हैं? जीन की हैंड राइटिंग के बारे में, और एमा को अपनी ही अहमकाना तारीफ को 2 बार सुनने का फायदा था, उससे पहले कि अच्छी बुरी औरत उसे समझ सके। इस दौरान वो जीन फेयरफिकस के खत से फरार होने के इम्कान पर गौर कर रही थी और किसी मामूली अज़र के तहत जल्दी से भागने के बारे में सोच रही थी, जब मास बेटस ने दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसकी तवज्जो मबजूल कर ली। वक्फताम, मेरी माँ का बहरापन आपको देखकर बहुत कम है, बस कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी आवाज बुलंद करने से और कोई भी बात 2 या 3 बार कहने से वो जरूर सुन लेगी। लेकिन फिर वो मेरी आवाज की आदी है। लेकिन ये बहुत काबिल जिक्र है कि इसे हमेशा जीन को मुझसे बेहतर सुनना चाहे। जीन बहुत अलग बोलती है, ताहम वो अपनी दादी को इससे ज्यादा बहरी नहीं पाएगी जितना वो 2 साल पहले थी, जो मेरी माँ की जिंदगी के वक्त में बहुत कुछ कह रहा है। और ये वाकई पूरे 2 साल हैं, आप जानते हैं, जब से वो यहाँ थी। हम पहले कभी भी उसे देखे बगैर इतने लंबे नहीं हुए थे, और जैसा कि मैं मिसेस कोल से कह रहा था, हमें शायद ही मालूम होगा कि अब उसे कैसे पूरा करना है। क्या आप जल्द ही यहाँ मास फेयरफिकस की तवक्को कर रहे हैं? जी हाँ, आने वाले हफ्ते। दरहकीकत ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं। हाँ, अगले हफ्ते। सब हैरान है और हर कोई एक जैसी वाजिब बातें कहता है। मुझे यकीन है कि वो हाईबेरी में अपने दोस्तों को देखकर इतनी ही खुश होगी जितना वो उसे देखकर हो सकते हैं। जी हाँ, जुमा या हफ्ता। वो ये नहीं कह सकती कि कौन सा है, क्योंकि कर्नल कैम्बल खुद उन दिनों में से एक गाड़ी की ख्वाहिश करेगा। इनमें से बहुत अच्छा है कि इसे पूरे रास्ते में भेजें, लेकिन वो हमेशा करते हैं, आप जानते हैं। हाँ, अगले जुमा या हफ्ता। उसके बारे में वो लिखती हैं। यही वजह है कि इसकी तहरीर से हटकर, जैसा कि हम उसे कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमें अगले मंगल या बुध से पहले इसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। तस्वुर किया, मुझे डर था कि आज मेरे मास फेयरफिकस के बारे में कुछ सुनने का इम्कान बहुत कम है। तो आपका फर्ज है। नहीं, हमें ये नहीं सुनना चाहिए था। अगर ये खास सूरत हाल न होती तो उसका इतनी जल्दी यहाँ आना था। मेरी वालिदा बहुत खुश हैं, क्योंकि वो हमारे साथ कम से कम 3 महीने रहेंगी। 3 महीने, वो मुस्बत अंदाज में कहती हैं, जैसा कि मुझे आपको पढ़कर खुशी होगी। मामला ये है कि आप देखते हैं कि कैम्बल आर्लिंगटन जा रहे हैं। मिसेस डिक्सन ने अपने वालिद और वालिदा को आमादा किया है कि वो आएं और इन्हें बराह रास्त देखें। उनका मौसम गर्मा तक जाने का इरादा नहीं था, लेकिन वो इन्हें दोबारा देखने के लिए बहुत बेचैन है, क्योंकि जब तक उसकी शादी हुई गुज़श्ता अक्टूबर तक वो उनसे 1 हफ्ता इतनी दूर नहीं थी, जिसकी वजह से इसमें रहना बहुत ही अजीब लगता था। मैं कहने जा रहा था कि मुख्तलिफ ममलुकतें हूँ, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक, और इसलिए उसने अपनी वालिदा या अपने वालिद को एक इंतहाई जरूरी खत लिखा। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं नहीं जानता कि ये कौन सा था, लेकिन हम फिलहाल जीन के खत में देखेंगे। मिस्टर डिक्सन के साथ साथ उनके अपने नाम पर उनके आने को बराह रास्त दबाने के लिए, और वो इन्हें डबलिन में मीटिंग देंगे और इन्हें वापस उनके मुल्क की नशस्त बॉली करे एक खूबसूरत जगह पर ले जाएंगे, जो मुझे पसंद है। जीन ने उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुना है। मिस्टर डिक्सन से, मेरा मतलब है, मुझे नहीं मालूम कि इसने कभी किसी और से इसके बारे में सुना हो, लेकिन ये बहुत फितरी था। आप जानते हैं कि वो अपने पते अदा करते वक्त अपनी जगह के बारे में बात करना पसंद करे, और जैसा कि जीन अक्सर उनके साथ बाहर चली जाती थी, क्योंकि कर्नल और मिसेस कैम्बल उनके बारे
में बहुत खास थे। बेटी अक्सर सिर्फ मिस्टर डिक्सन के साथ बाहर नहीं जाती, जिसके लिए मैं उन पर बिल्कुल भी इल्जाम नहीं लगाता। यकीनन उसने वो सब कुछ सुना जो वो मास कैम्बल को आर्लिनेड में अपने घर के बारे में बता रहा था, और मुझे लगता है कि इसने हमें ये लफ्ज लिखा है कि इसने इन्हें इस जगह के कुछ ड्राइंग दिखाए थे, वो ख्यालात जो उसने खुद लिए थे। मुझे यकीन है कि वो एक इंतहाई मिलनसार, दिलकश नौजवान है। जीन अपनी चीजों के हिसाब से आर्लिनेड जाने के लिए काफी तरस रही थी। उस वक्त जीन फेयरफिकस, इस दिलकश मिस्टर डिक्सन और आर्लिनेड न जाने के हवाले से एमा के दिमाग में एक ज़हीन और मुतहर्रिक शक दाखिल हो रहा है। उसने मजीद दरियाफ्त के कपटी डिजाइन के साथ कहा, आपको ये बहुत खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए। ऐसे वक्त में मास फेयरफिकस को आपके पास आने की इजाजत होनी चाहिए। उसकी और मिसेस डिक्सन के दरमियान खासी खास दोस्ती को देखते हुए आप शायद ही ये तवक्को कर सकते थे कि उनसे कर्नल और मिसेस कैम्बल के साथ जाने से माजरत की जाएगी। बहुत सच बेशक, वो चीज जिससे हम हमेशा डरते रहे हैं, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं करना चाहिए था। इसे हमसे इतनी दूरी पर रखूं, महीनों तक साथ, अगर कुछ होना था तो आने के काबिल नहीं। लेकिन आप देखते हैं, सब कुछ बेहतरीन होता है। वो चाहते हैं कि वो मिस्टर और मिसेस डिक्सन जरूरत से ज्यादा कर्नल और मिसेस के साथ आएं। कैम्बल काफी इस पर मुनहसिर है। जीन का कहना है कि उनकी मुश्तरका दावत से ज्यादा मेहरबान या दबाव कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि आप अभी सुनेंगे। मिस्टर डिक्सन किसी भी तवज्जो में कम से कम पीछे नहीं लगते हैं। वो एक इंतहाई दिलकश नौजवान है। जब से उसने वेमाउथ में जीन की खिदमत की थी, जब वो पानी पर इस पार्टी में बाहर थे और वो जहाजों के दरमियान किसी चीज या दूसरे के अचानक टकराने से एकदम समंदर में टकरा गई थी, और हकीकत में सब चला गया। अगर उसने दिमाग की सबसे बड़ी मौजूदगी के साथ इसकी आदत को न पकड़ा होता, मैं इसके बारे में कभी काम पे बगैर सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब से हमारे पास इस दिन की तारीख है, मुझे बहुत पसंद है मिस्टर डिक्सन के। लेकिन अपनी तमाम दोस्तों की उजलत और आर्लिनेड को देखने की अपनी ख्वाहिश के बावजूद मास फेयरफिकस आप और मिसेस बेटिस को वक्त देने को तरजीह देती हैं। हाँ, मुकम्मल तौर पर इसका अपना काम, मुकम्मल तौर पर उसकी अपनी पसंद, और कर्नल और मिसेस कैम्बल सोचती हैं कि वो बिल्कुल ठीक करती हैं, बस वही जो इन्हें तजवीज़ करना चाहिए, और दरहकीकत वो खास तौर पर चाहते हैं कि वो अपनी आबाई हुआ आजमाए, क्योंकि वो हाल ही में मामूल के मुताबिक इतनी अच्छी नहीं रही। मैं इसके बारे में सुनकर फिक्रमंद हूँ। मेरे ख्याल में वो अक्लमंदी से फैसला करते हैं, लेकिन मिसेस डिक्सन को बहुत मायूसी हुई होगी। मिसेस डिक्सन, मैं समझता हूँ, जाती खूबसूरती की कोई काबिल जिक्र डिग्री नहीं रखती। किसी भी तरह से मास फेयरफिकस से मुवाजना नहीं किया जाएगा, यकीनी तौर पर नहीं। इनके दरमियान कोई मुवाजना नहीं है। मास कैम्बल हमेशा बिल्कुल सादा लेकिन इंतहाई खूबसूरत और मिलनसार थी। हाँ, बिल्कुल। जीन को शदीद सर्दी लग गई, गरीब चीज। 7 नवंबर के तौर पर बहुत पहले, जैसा कि मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, और उसके बाद से कभी ठीक नहीं रहा। एक तवील वक्त किया ये नहीं है, एक सर्दी के लिए इस पर फांसी। उसने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो करेगी। हमें अलार्म ना करें, बिल्कुल इसकी तरह। बहुत ख्याल रखने वाला, ताहम वो सेहत से बहुत दूर है कि इसके मेहरबान दोस्त कैम्बल के ख्याल में वो बेहतर तौर पर घर पहुंचती और ऐसी हुआ आजमाती है जो हमेशा इससे मुत्तफिक हो, और इन्हें इसमें कोई शक नहीं कि हाई बेरी में 3 या 4 माह तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी, और ये यकीनन बहुत बेहतर है कि वो यहाँ आ जाएं, इससे कि वो आर्लिनेड चली जाएं, अगर वो बीमार है। कोई भी इसकी परवरिश नहीं कर सकता, जैसा कि हमें करना चाहिए। ये मुझे दुनिया का सबसे मतलूबा इंतजाम मालूम होता है।
और इस तरह वो अगले जुमा या हफ्ता को हमारे पास आनी है, और कैम्बल की छुट्टी वाले शहर पैर के रोज होली जाने के लिए रवाना होंगे, जैसा कि आपको जीन के खत से मालूम होगा। इतना अचानक आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्यारी मास वुड हाउस, उसने मुझे किस कदर झुंझोड़ कर रख दिया है। अगर ये इसकी बीमारी की खराबी की वजह से नहीं थी, लेकिन मुझे डर है कि हमें उसके दबले पतले और बहुत खराब नजर आने की तवक्को करनी चाहिए। मुझे आपको बताना जरूरी है कि मेरे साथ क्या बदकिस्मत वाकया पेश आया। मैं हमेशा जीन के खतूत को सबसे पहले अपने जरिए पढ़ने का इशारा करता हूँ, उससे पहले कि मैं इन्हें अपनी वालिदा को बुलंद आवाज से पढ़ूं। आप जानते हैं, इस खौफ से कि उनमें उसे तकलीफ पहुंचाने वाली कोई चीज है। जीन ने मुझसे ये करना चाहा, लिहाजा मैं हमेशा करता हूँ। और इस तरह मैंने अपनी मामूल की एहतियात के साथ दिन का आगाज किया। लेकिन जैसे ही मुझे इसके बीमार होने का जिक्र आया, मैं बहुत खौफजदा होकर फट पड़ा। मुझे बरकत दो, बेचारी जीन बीमार है, जिसे मेरी माँ जागते हुए वाज़ेह तौर पर सुना और अफसोस के साथ घबरा गई। ताहम जब मैंने पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि ये इतना बुरा नहीं था जितना मैंने पहले सोचा था, और मैं अब उसके बारे में इतना हल्का करता हूँ कि वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने मुहाफिज से इतना दूर कैसे रह सकता हूँ। अगर जीन जल्द ठीक नहीं हुई तो हम मिस्टर पीरी को फोन करेंगे। खर्च के बारे में सोचा नहीं जाएगा, और अगरचे वो इतना आजाद ख्याल है और जीन को इतना पसंद करता है कि मैं ये कहने की जसारत करता हूँ कि वो हाजिरी के लिए कुछ भी वसूल नहीं करेगा। आप जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके पास एक बीवी और खानदान है जिसे बरकरार रखना है, और उसे अपना वक्त नहीं देना है। ठीक है, अब मैंने आपको जीन के बारे में लिखने के बारे में एक इशारा दिया है। हम उसके खत की तरफ रुजू करेंगे, और मुझे यकीन है कि वो अपनी कहानी इससे कहीं ज्यादा बेहतर बताती है जो मैं उसे बता सकता हूँ। मुझे डर है कि हम भाग रहे होंगे, एमा ने हैरियट की तरफ देखते हुए कहा, और उठना शुरू कर दिया। मेरे वालिद हमारी तवक्को कर रहे होंगे। मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि मैं 5 मिनट से ज्यादा ठहरने की ताकत नहीं रखता। जब मैं पहली बार घर में दाखिल हुआ, मैंने महज फोन किया, क्योंकि मैं मिसेस बैटर से पूछे बगैर दरवाजे से नहीं गुजरूंगा। लेकिन मुझे बहुत खुशगवार तरीके से हिरासत में लिया गया है। ताहम अब हमें आपको और मिसेस बैटर्स को सुबह बखैर की ख्वाहिश करनी चाहिए। और वो सब कुछ कामयाब नहीं हुआ जो उसे हिरासत में लेने के लिए कहा जा सकता था। उसने गली को दोबारा हासिल किया, इसमें खुश कि अगरचे उसकी मर्जी के खिलाफ इस पर बहुत कुछ मजबूर किया गया था। अगरचे उसने हकीकत में जीन फेयर फिकस के खत का सारा मादा सुन लिया था, लेकिन वो खुद इस खत से बचने में कामयाब हो गई थी।